गाजा हॉस्पिटल उपरे किए कला आक्रमण 500 रु अधिक निरीह लोकों को किए मारिला ये नरकीय कांड पछरे इस्राएल ना पालेस्टाइन इस्लामिक जिहादी संगठन गाजा शहर अल अहली अरब हॉस्पिटल उपरे रॉकेट आक्रमण को नहीं सारा विश्व में जारी रही निंदा और समालोचना हेले इस्राएल यह मानवा को नाराज इस्राएल डिफेन्स फोर्स कहवा कथा यह काले पालेस्टाइन इस्लामिक जिहादी संगठन काम पालेस्टाइन किंतु यह मानवा को नाराज इस्राएल ही गाजारे गणहत्या घटे चली जातिसंघर अवस्थापित पालेस्टाइन स्थायी प्रतिनिधि Israel is perpetrating massacres in Gaza every single day. For over 10 days now, you have witnessed it, killing entire families, bomb shelters, schools, hospitals, residential buildings, convoys. You have heard it telling people to head south of Gaza and then bomb the south. इस्राएल रो टार्गेट हमास ले प्राण हराउछन्ती साधारण निरीह जनता विश्वर अधिकांश देश याकु निंदा करछन्ती सत हेले युद्ध तुरंत बंद करबा को केही कहू रहंती जाहाकु जातिसंघरे उठैछन्ती पालेस्टाइन रो स्थायी प्रतिनिधि You will all say civilian lives should be protected, and yet some of you until now continue being unable to call for a stop to the assault, to call for an immediate ceasefire. गाजार साधारण निरीह जनता उपरे तुरंत आक्रमण बंद होगा दरकार बोली कहते पालेस्टाइन प्रतिनिधि जातिसंघ सेभली किछि पदक्षेप नेउनथिबा अभियोग करछन्ति से A political disaster is underway, and yet the Security Council of the United Nations is unable to say the only thing that truly matters. Stop the bloodshed. I repeat, stop the bloodshed. सेपटे पालेस्टाइन प्रतिनिधि को जातिसंघरे कैप्चर करछन्ति इस्राएल प्रतिनिधि इस्राएल उपरे गत 7 तारिख रे हमास करथिबा अतर्कित रॉकेट माड़ को हाइलाइट करी 9/11 आक्रमण सह तुलना करछन्ति अक्टोबर 7 रे हमास करथिबा आक्रमण एबे भी प्रतिटी इस्राएल को मनरु लेबि नथिबा से कहछन्ति The most barbaric and wide-scale terror attack in decades, bigger than 9/11, was perpetrated 11 days ago, and it seems like this council has already forgotten. The pictures and footage from the October 7th pogrom are seared into my brain, in every Israeli's brain, forever. But it seems that I must remind some of you of what happened. इस्राएल मध्य प्रवेश करी हमास किभली बर्बरोचित हत्याकांड घटैछि जातिसंघरे ता हाइलाइट करछन्ति इस्राएल प्रतिनिधि Thousands of barbaric Hamas Nazis invaded Israel and brutally murdered 1,400 innocent Israelis as they slept, celebrated, hugged their families in fear, and cried for mercy. Some were raped, others beheaded, and some were burned alive while bound and gagged. Many were children, and hundreds were young people at a music festival. अमेरिका और इस्राएल समेत किछि देश हमास को आतंकवादी संगठन कहउछन्ति किंतु जातिसंघ एजाए ताहा घोषणा करिनि जाहाको इस्राएल प्रतिनिधि समालोचना करबा सहित हमास रो अपराधिक अभिमुख्य व्याख्या करिसन्ति Although there are some here that choose not to designate Hamas as a terror organization for political reasons, it still doesn't change the facts. Hamas deliberately targets civilians and massacres children when given the chance. This makes Hamas a terror organization, no different than ISIS. गाजा हॉस्पिटल रॉकेट माडर दिनक परे इस्राएल जाइतिले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन इस्राएल नुहे और इस्राएल रो अदर टर्न थ्योरी को समर्थन करथिले बाइडेन सेपटे आक्रमण 40 घंटा परे तेल अवीव रे पहुंचिसंती ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हमास आतंकवादी आक्रमण में इस्राएल जो क्षयक्षति होती जेते लोक मृताहत होती से नहीं से गभीर दुख व्यक्त कर जेरुसलेम रे इस्राएल राष्ट्रपति
हेरजोम को साक्षात करचंती ऋषि सुनक पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सहित आलोचना करचंती। In the last 2 weeks, this country has gone through something that no country, no people should have to endure, least of all Israel, which has lived through some of the most awful scenes, the spectre of violence and terrorism every day of its existence. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. अंधार गाजारे खाद्य और पानीय जलर संकट गुरुतर हेलाणी। गाजा स्ट्रिप को इजरायली सेना चारिपटू घेरी रहिबा कारणरू कौनसी प्रकार मानवीय सहायता पसी पारुनी। शह ट्रक इजिप्ट सीमारे छिड़ा होई रहिछि। एभली स्थिति राफा बॉर्डर गेट खोलिबाकू इजिप्ट सह कथा होइछन्ते अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। गाजारे मानवीय सहायता तुरंत पहुंचाइबा उपरे से गुरुत्व दैछन्ति। एथिसहित इजरायल को आहुरी सामरिक सहायता जोगाई देबाकू से घोषणा करिछन्ति। Gaza need food, water, medicine, shelter. Today I asked the Israeli cabinet, who I met with for some time this morning, to agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza, based on the understanding that there will be inspections and that the aid should go to civilians, not to Hamas. My administration was in close touch with your leadership from the first moments of this attack. We're going to make sure we have what you need to protect your people, to defend your nation. For decades, we've ensured Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. अनुमान करदाउतला भयंकर हॉस्पिटल आक्रमण पर गाजारे रॉकेट और बोमा माड़ किछिटा कमिजिबो, किंतु सेभଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। गत 24 घंटाରେ इजरायली सेनार घन घन आक्रमणରେ आहुरी 120 रु अधिक लोकଙ୍କ जीवन ଯାଇଛି। अक्टोबर 7 आक्रमण परठारू इजरायलर 1400 लोक प्राण हरैथिबा बेले गाजारे मलेणी 3500 रु अधिक। उभय पक्षर आहतଙ୍କ संख्या 15000 ऊपर हेलाणी, किंतु निकट भविष्य में युद्ध बंद होबार संभावना देखा जाउनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।